हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में गिवन है कि ए लोड ऑफ मास m is on horizontal rails. A pendulum made of ball of mass m tied to a weightless inextensible thread is suspended to the load. Right? The load can move only along the rails. Determine the ratio of the time period t2 by t1 of small oscillation of the pendulum in vertical plane parallel and perpendicular to the rails. राइट, तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल रेल है। सो इस रेल में एक मास एम, ए लोड ऑफ मास एम इज केप्ट, राइट, एंड ए पेंडुलम इज मेड ऑफ ए बॉल ऑफ मास एम टाइड टू वेटलेस इनएक्स्टेबल थ्रेड। सो एक पेंडुलम है जहां पर एंड में एक मास एम टाइड है, राइट। तो इस पेंडुलम को दोनों तरीके से छोड़ा जा रहा है। वन इज इन वर्टिकल प्लेन एंड सेकेंड इज पैरेलल टू द रेल, राइट। तो फर्स्ट केस में लेट्स से कि पैरेलल में इसको, रेल के पैरेलल में इसको छोड़ा गया, जस्ट लाइक दिस। और सेकेंड केस में ये जो पेंडुलम है इसको इस रेल का परपेंडिकुलर कुछ ऐसा, दैट मीन्स लाइक दिस, इट इज मेड टू मूव, राइट। तो फर्स्ट केस में अगर टाइम पीरियड t1 है और सेकेंड केस में टाइम पीरियड अगर t2 है, तो वी हैव टू फाइंड t2 बाय t1 विल बी 1, राइट। सो इस क्वेश्चन में हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा दैट इज टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम, राइट। सो जो कि हम जानते हैं कि लेट्स से एक पेंडुलम का लेंथ है l और द मास m इज अटैच्ड विथ इट। सो इसका जो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है वो है 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी, वेयर जी इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि द लोड कैन मूव ओनली अलोंग द रेल्स, मतलब ये जो लोड है वो कुछ ऐसे अलोंग द रेल ही मूव कर सकता है, राइट। सो सेकेंड केस में जब या द मास इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द रेल्स, तो इस केस में तो ये मास ऐसा मूव नहीं करेगा अलोंग द रेल्स, राइट, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स एक्ट ही नहीं कर रहा। सो इन इस केस में जो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला वो कुछ नॉर्मल जैसा होता है, दैट इज 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी, ऐसे ही होगा, बिकॉज द मास एम दैट इज द लोड इज नॉट मूविंग। नाउ सेकेंड केस में as there is a horizontal force also, so the mass will move, right, so the mass will move. Let's say कि at any point, at any instant, the mass is here and the pendulum is like at this position, right. And similarly here at any instant the pendulum will be at this position, right, because the pendulum is moving along the parallel to the rail, right. So as we can see from here that the pendulum is passing through the center of mass, right. So to the line of center of mass the pendulum, the thread of the pendulum is moving. So you can say that the pendulum is moving along its center of mass, right, along its center of mass it is moving. So we can, so let's take that this distance is L1 and the total distance is L, and the mass of this ball is small m, right. So from center of mass equation we can write, let's take that this is our origin and this axis is x-axis for our assumption. Then we can write that the distance of the center of the mass from the mass small m, that is L1, is equals to m1 x1. So x1 is 0, so m1 into 0 plus
big M into L. So ml by m1 plus m2, that is m plus m, right? So this is the value of L1, and we can say that the pendulum is doing a SHM across this L1. That means the time period will be, that is T2, will be 2 pi into root over L1 by G. So L1 is ml by m plus m G, right? So from here we can write that T2 by T1 is equals to 2 pi root over of ml by m plus m G by 2 pi L by G. So that is equals to root over of m by m plus m, that is T2 by T1, right? And this is the value which were asked, that is the ratio of the time period when the pendulum in vertical planes parallel and perpendicular to the rays, right? So that is T2 by T1 is equals to root over of m by m plus small m. So hope you understand it. Best of luck.